Now, farmers' tractor rally showdown in the Supreme Court. The top court has put the onus on the Delhi police to decide on Farmers' Republic Day tractor rally. Hearing a plea filed by the Delhi police, the apex court had said that the court cannot tell the police about its own powers. Police can decide who can enter into the Delhi, and the court can't interfere. The matter has now been adjourned until 20th of January. Delhi police in its plea had said that proposed tractor march by farmers may disrupt Republic Day celebrations and can create law and order confusion, a situation there. Farmers, however, maintain that their tractor rally will be peaceful and that it won't disrupt the 26th January celebrations. Farmers plan to conduct a 50-kilometer-long tractor protest around the ring road or outer ring road of the national capital. Meanwhile, farmers have also filed a plea there in the Supreme Court seeking removal of all 3 Supreme Court panel members and demanding new mediation committee. Supreme Court appointed panel will be holding its first meeting on January 19th at Pusa campus to resolve this impasse that's been on for months now. जी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है। पुलिस वाले आओगे बैठ कर बात कर लेंगे। हमने कहा आगे रिंग रोड पर को आएगा और लेकर निकल जाएगा ट्रैक्टर, अंदर नहीं हम जाएंगे। ये हमने जो जत्थेबंदी जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने तय कर लिया कि हम दिल्ली के अंदर नहीं अब जा रहे, हम जो रिंग रोड है उस पर को जाएंगे। बस जो बेटा और बाप, इधर जवान है दिल्ली पुलिस का, उधर उसका बाप खड़ा हुआ है किसान बनके, इनकी लड़ाई खत्म हो, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। 26 जनवरी से पहले अगर हमें रामलीला मैदान दे दिया जाता है तो हम उसमें रामलीला मैदान में पहुंच के बाकायदा 26 जनवरी की परेड भी देखेंगे और अपने आंदोलन को भी जारी रखेंगे, अपने अधिकारों की भी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। इसलिए 17 जनवरी को लोक शक्ति भाकियू के अध्यक्ष की तरफ से कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन दे दी गई। अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो आपके इशू हैं इस कानून के अंदर अगर संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ हम चाहे वैसा हो। इन्हीं बिलों के माध्यम से निश्चित रूप से किसान को आत्मनिर्भरता मिलेगी। और बाकी जो ट्रैक्टर रैली या अन्य जो बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि देश के अंदर सब शांति बनाकर और जो आपकी बात है उसको इशू को रखें और उसका समाधान है वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो समाधान करने के लिए भारत सरकार है वो खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उस आंदोलन को भी कहा गया है पाकिस्तानी समर्थक है, चीनी समर्थक है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है और इस प्रकार से तमाम आरोप उन पे लगाए गए, फिर भी किसान डटे रहे। और अब जाके जो किसान आंदोलन जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके घर में NIA के भी रेड नोटिस दिया गया है। मैं समझता हूं कि कितना भी कोशिश कर ले दबाने की, मैं नहीं समझता कि वहां के किसान दबेंगे या पीछे हटेंगे। Anisha joining us live for more details on that. Anisha, the Supreme Court hearing the plea filed by the police asking for an injunction to be implemented on the tractor rally on 26th of Jan has reminded the police of their own powers, asking the cops to deal with the tractor rally and stop them where they have to and limit the numbers, and the court can't intervene. Take us through what else did the court observe? Well, it was a very short hearing today, just barely 2 to 3 minutes, where the Chief Justice S.A. Bobde made his opinion of this application sort of quite clear, asking why is it that the government, that the administration wants the court to remind them of the powers that they possess. The court has been very clear in saying that this is the permission for the rally or denial of a permission for the rally is not their job. They have very clearly observed that who enters Delhi and how many people enter Delhi and when is not something for the court to decide. It is something that the administration has to look into. However, with the Solicitor General saying that these are important issues, that this is a constitutional parade, the Republic Day parade is a very important thing for the country. He asked for the court's intervention. The hearing is now on Wednesday. We'll have to also see what the farm associations have to say about that, because the court specifically asked whether the representatives, the lawyers for the farm associations were present in the court today. But the indication coming very clearly that it is for the government, for the police to decide whether any permission for the tractor rally will be given or not. And given the fact that the government has raised very serious concerns about the possible security breach and with the entry of that many people into the city, it is highly unlikely that the government is going to bend on the tractor rally permissions. Back to you. Thank you very much, Anisha, for joining us with those details.
Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.